Okay. 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 Great. So I can see few people have prepared it and few people have not prepared. So we'll discuss in detail that what does it take to make our business projections. It's very important that we should make our business projection. Business projection बनाने से दो काम होते हैं. पहला काम होता है हमें अपने बिजनेस के बारे में अल्टीमेट क्लैरिटी मिलती है कि वेयर आर बिजनेस इज गोइंग ऑन. ठीक है, whether what I am doing makes sense, whether it is profitable or whether it will not generate profits, right? Secondly, it shows to the investors that what my business is. My business is a dynamite. It can generate so much of revenue in future. It is the best investable business on this planet. So that's how we should portray it, and that's how it should be. And we are convinced that it's the best thing in the world that we are doing. Only then we are putting our time, energy, resources in this business, yes or no? So we are putting in so much resources in this business only because we think that it is the best in this world. It can give highest profits. It is most ethical business that we are doing, right? And the same thing we need to portray to the investors through our numbers कि यार इससे बढ़िया डील तुम्हें नहीं मिल सकती. तुम 10 बिजनेसों में लगा लो लेकिन ये बिजनेस जो है तुम्हें सबसे बेस्ट रिटर्न्स मिलेगा. इट माइट बी पॉसिबल कि इमीडिएट रिटर्न्स ना दे, but in long term this is the best investment that you have, and that we need to showcase to the investors. So we'll start with a historical information. For all of you who have been doing business for a year or two, you would be having your past data. ठीक है, तो पास डेटा में आप देखोगे, आप लिखोगे कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त में मैंने कितनी सेल्स करी, क्या मेरे एक्सपेंसेस थे. एक्सपेंसेस कौन से होते हैं. फर्स्ट एक्सपेंसेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कि मेरा जो है अगर मैं 100 रुपए का प्रोडक्ट बेच रहा हूँ तो वो मैंने 20 रुपए का बनवाया, 50 रुपए का बनवाया, तो दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. देन कम अदर एक्सपेंसेस, माई मार्केटिंग एक्सपेंसेस, whether I have spent online, whether I have spent offline, whether I have spent on social media. तो मैंने कितना मार्केटिंग एक्सपेंस किया. उसके बाद जो है एक्सपेंसेस आते हैं मेरा एचआर का. हाउ मेनी टीम मेंबर्स आई हैव, व्हाट इज देयर सैलरी विच आई हैव put in my business. Then there can be admin expenses, मेरा rent, मेरा chartered accountant की fees, and there can be technology expenses, मेरे server की cost, मेरी tech team की cost, etc. So these are the expenses that I do and how much profits do I earn. So all of you would like to see it, how it is done. I'll show you a sample working over here. I hope you can see an Excel sheet. Okay. Okay. So basically, first of all, we need to create that how much is my earnings historical information. That we need to take some assumptions कि मेरा future में कितना होगा. ठीक है. So there is a assumption sheet which is prepared and all the assumptions are put in yellow so that what you can make these changes and your entire financial model changes in future. तो आप assumption ले सकते हो. Assumption क्या लिया है कि मेरा मार्केटिंग का बजट कितना होगा, मेरा कॉस्ट पर क्लिक कितना आएगा. फॉर एग्जांपल अगर मैं B2C ब्रांड हूँ या फिर मैं अपना ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहा हूँ तो मेरा कॉस्ट पर क्लिक कितना आएगा. हाउ मेनी परसेंटेज विजिटर्स विल रजिस्टर ऑन माय वेबसाइट, आउट ऑफ दोज परसेंटेज रजिस्टर हु रजिस्टर ऑन माय वेबसाइट, हाउ मेनी विल बाय द प्रोडक्ट, हाउ मेनी पीपल हु बाय द प्रोडक्ट विल रीबाय फ्रॉम माय प्रोडक्ट, राइट. तो ऐसे हम जो है पूरी एजम्पशंस लेते हैं मार्केटिंग रिलेटेड. सेल्स की कि मेरा एवरेज ऑर्डर साइज कितना होगा, मेरा मार्जिन कितना होगा, मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना होगा, उसमें मेरा फिक्स खर्चा कितना होगा, मेरा वेरिएबल खर्चा कितना होगा. देन you can see that all those assumptions can be taken and these assumptions can help us make our future roadmap. जब हम ये सारी assumption ले लेते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अपनी सेल्स को फोरकास्ट करते हैं कि मेरा month on month, you can see month 1, month 2, month 3, month 4, month on month, how much would be my sales in the next year. Then we make it for 2 years, then we make it for 3 years, then we make it for 5 years. So we have to start with it. Okay, so all of you would be saying कि यार ये तो बहुत डिफिकल्ट है, हमारे बस की बात नहीं है, राइट. हम कोई फाइनेंस के बंदे तो है नहीं, तो हमसे बनता नहीं है. बट फ्रेंड्स, please understand, even if you are hiring a consultant to prepare these kind of workings for you, it is very important that you start working on it, and we call it that start working on it in the SSG mode. What is SSG? SSG mode is start simple घटिया.
We expect that it would be simple that we'll prepare and it would be ghatia. We don't want perfection in this. Okay, so you just need to get started with it because it will be benchmark for your business. You can do planned versus actual in your business if you have prepared these kind of workings. तो इसमें आपको पता चलेगा कि मंथ ऑन मंथ जो है आपका जो है रेवेन्यू कितना है, आपका जो है एक्सपेंस कितना है, आपका जो है प्रॉफिट कितना है, आपने कौन सी जोग्राफिकल एक्सपेंशन करा है, आपने जो है प्रोडक्ट लाइन एडिशन करा है। जब आपका वो थॉट प्रोसेस था कि वो लेट सपोज 6 मंथ्स के बाद मैं दूसरी ज्योग्राफी में जाऊंगा, आज मैं दिल्ली में बेचता हूँ, आई गो टू बॉम्बे आफ्टर 6 मंथ्स, वेदर यू आर गोइंग और नॉट, I am in Delhi right now, I want to launch in Dubai in next year, whether I am capable enough of doing it or not. So all these things comes in number format in a financial model thing. तो हम अपना क्या करते हैं, assumptions लेके sales forecast करते हैं। सेल्स फोरकास्ट हम सिंपल कर सकते हैं कि मेरा मार्केटिंग का बजट कितना है, उसमें मेरा कॉस्ट पर क्लिक कितना है, उसमें मेरे कितने विजिटर्स आएंगे। तो इसे हम अपना बोलते हैं सेल्स फनल। हम एक सेल्स फनल बनाते हैं कि कितना खर्चा करेंगे, उसमें कितने विजिटर्स आएंगे, विजिटर्स से कितने जो है सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब में कितने लोग पेड करेंगे, पेड में कितने मेरे रिपीट करेंगे। और वो जो सेल्स फनल है, उस सेल्स फनल के बेसिस पे हम अपना बजट बढ़ाते रहते हैं और हम अपना एक मॉडल बनाते हैं। ठीक है, अब मॉडल के अंदर हमने फोरकास्ट कर लिया कि मेरा रेवेन्यू स्ट्रीम वन, इट कैन बी अ बिजनेस में हैव मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम, राइट। तो एक रेवेन्यू स्ट्रीम से मेरे कितना रेवेन्यू होगा, दूसरे रेवेन्यू स्ट्रीम से मेरा कितना रेवेन्यू होगा, एंड सो ऑन। वंस वी फोरकास्ट आवर सेल्स देन वी एस्टिमेट आवर एक्सपेंसेस ऑन इट। देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इफ यू आर आउटसोर्सिंग योर प्रोडक्शन, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विल रिमेन मोर और लेस सेम, राइट। So when cost of goods sold is same, so we can easily estimate our cost of goods sold. Other than that, we can estimate our HR cost. Okay. So in our HR cost, you can write the name of the people. All of you will get this sample working of a financial model for your reference purposes. So it's a gift from our side to all of you who are attending this session. So you can use these templates to make your financial model in SSG mode, right? So you can write the designations wherein the people who you will be hiring, and then you can write down their salary cost, and you can write the head count, that how much people you will need at what stage in year one, in quarter one, quarter two, quarter three, how much people you need, quarter two, year two, how much you'll need, year three, how much you'll need, what will be their salary brackets you can need, and you can estimate your HR cost this way. Okay, it's look doable or not? Yes or no? Yeah, what we are discussing, does it look doable? Okay, great. Yeah, so it is very much doable. Very good, thank you. So once we estimate all our expenses, we estimate our marketing expense, we estimate our HR expenses, we estimate our technology expenses, we estimate our admin expenses. Okay, we estimate our cost of goods sold expenses. When we estimate all these expenses, we can make a profit and loss account. Okay, from profit and loss account, we can make our balance sheet. From our balance sheet, we can make our cash flow statement. So for making your profit and loss account, for making your balance sheet, for making your cash flow statement, you may need a help of your chartered accountant or your accountant, or you can approach IS Start or Start a CFO, will be more than happy to assist you. Once you make your balance sheet, your profit and loss account, and your cash flow statement, you are able to get valuation of your company. Okay, we'll discuss more about how we get valuation. Part one is to build projections for your business, which we discussed how we can make. First of all, we can see the historical data. After historical data, we can make the assumptions. Second step, for those assumptions, third step is to we can forecast our sales and we can forecast our expenses. Okay, so fourth step is to prepare your profit and loss account, your balance sheet, your cash flow statement. And the sixth step is to analyze whether what I have done makes sense or not. How much money will I need to do? I'll need too much money, so whether I should rework on my numbers. If I need too less money, so what I am waiting for? Let's get started. So you can make different permutations and combinations and work on your numbers to make a doable and practical financial model. Okay, first financial model, we should prepare it for ourselves. Second financial model, we should prepare for investor, right?
While preparing this financial model, you should also take help of the data of your competitors. So there would be some other companies who would be doing something similar to you. They might not be doing exactly what you are doing, maybe, but they would be doing something in the similar industry. Or if you are trying to do something in India, they would have done something in US or Dubai or somewhere, right? So we can see how much numbers they have achieved, and then we can compare our numbers with their numbers, that in 5 years how much number they have achieved, whether what I have made assumption makes sense or not. Whenever investor will ask you, so you can always tell them, if they can do, we can do, right? So we can always use it as a benchmark, that, and they'll be happy to know that you have done such a great research on your investor data. We can also show you how we can find out the data of our investor companies. It's very easily accessible. You can go on MCA website and you can pay a fees of 100 rupees to 300 rupees, and you can download all their financial data. You can download who are the investors in that company. You can download what is the valuation. You can download how much is their sales number, how much is their profitability, how much is their capital. Everything we can do of any private limited company or any LLP, and we can use that in our research, right? So coming back to our presentation now. Yeah. So this is what we discussed, that we have an historical information, then we analyze relationships and make assumptions, project sales, cost, others, and then develop complete financial and analysis and run scenarios and change assumptions. So this is how we will be able to make our financial model. We can conduct a detailed workshops also for how to create financial model, because it's not possible to cover entire aspect in an hour's time, but I have given you an overview which would be very helpful for you to prepare it, and we'll also be sharing the sample workings. So this will help you to get started to prepare it. Okay. Great. So first of all, we need to prepare our historical financials, and then make assumptions, and then we need to make our future projections. Then we have to get an appropriate discount rate to discount our future projections. Now, what is this discount rate? Discounted cash flow means discount rate. So what is this discount rate? For example, if you have done a fixed deposit of 1 crore rupees, okay, how much interest you will get every year on that? If the rate of interest is 7% and you have done a fixed deposit of 1 crore rupees, how much interest you will get on that? Very simple mathematics. 1 crore, 7% rate of interest. Yeah, you can put it into the chat. 7 lakhs, right? Okay, great, great. So see, I'll get 7 lakh rupees every year on year. Year one, I will get 7 lakhs. Year two, I'll get 7 lakh rupees, or maybe 7 lakh get compounded. I'll get 7 lakh 50,000 or something like that, right? So now the money which I'm getting, 7 lakh rupees, 7 lakh 50,000 rupees, 8 lakh rupees, 9 lakh rupees, if I discount it with 7%, the present value will come out to be 1 crore rupees. So if I have a business that generates 7 lakh rupees of profit for me every year, so the valuation of that business comes out to be 1 crore rupees. So that's the funda of discounting. Okay. Now 7 lakh rupees, which I'm getting, is the risk-free rate of return. So we understand that the government bonds or fixed deposits from the bank will almost have zero risk. So it is called as risk-free rate of return. Now let's suppose you invest your money in Reliance Industry shares, or you invest in your money into the share market. So how much rate of return you will expect from the share market? Yeah, people can put it into the chat box. They would be investing some money into the shares. So how much percentage you expect from the share market? No expectations? Oh, okay. Somebody expects 10%, somebody expects 20%, or somebody is simple saying more than government bonds, or 30% maybe. Yeah. So if we talk about Sensex, so from 2000, from 1978 till date, if we calculate CAGR of Sensex, it will come out to be approximately 15%. So we can say, यार, if I am investing on stock exchange, तो मेरे को 15% तो minimum investment के अंदर जो है return आनी ही चाहिए. Yes or no? Right?
तो 15% मेरे को क्यों आनी चाहिए? क्योंकि उसमें जब मैं कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, देयर इज अ रिस्क एसोसिएटेड विद दोस कंपनीज, राइट? सो हायर द रिस्क, हायर द रिटर्न. So if my risk is more, my expectation for the return is more, राइट? हो सकता है कि कल हम रिलायंस में पैसे लगाएं और रिलायंस के अंदर कुछ गवर्नमेंट चेंज हो जाए, और समथिंग मे बी इट कैन हैपन कि किसी कंपनी के ऊपर कोई रेड हो गई, किसी कंपनी के ऊपर कोई फ्रॉड निकल गया, सो माय रिटर्न कैन गो इन वेन, राइट? सो व्हेन आई एम इन्वेस्टिंग इन स्टॉक एक्सचेंज, सो माय एक्सपेक्टेशन इज मोर. नाउ इफ सम इन्वेस्टर इज इन्वेस्टिंग इनटू स्टार्टअप्स, तो स्टार्टअप्स के अंदर रिलायंस इंडस्ट्रीज से ज्यादा रिस्क है या कम रिस्क है? ज्यादा रिस्क है, राइट? तो स्टार्टअप के अंदर जब ज्यादा रिस्क है, तो एक्सपेक्टेशन भी जो इन्वेस्टर की होती है वो स्टार्टअप से रिटर्न की ज्यादा होती है. सो वेन एवर एन इन्वेस्टर इज इन्वेस्टिंग इन टू अ स्टार्टअप, सो ही हैज मोर एक्सपेक्टेशन एंड देयर फोर द रिटर्न विच ही इज एक्सपेक्टिंग इज मोर देन द स्टार्टअप. And when the return is more than, sorry, return is more than the money he is putting into the stock market in some big companies, and since his expectation is more because the risk proposition is more, तो मेरा डिस्काउंटिंग रेट भी जो है ना वो ज्यादा हो जाता है. ठीक है? तो अगर मैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स में लगाऊंगा तो मेरी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है 7%. इंडिया की बात कर रहा हूं मैं. ठीक है? अगर मैं शेयर मार्केट में लगाऊंगा तो 7% के अंदर मैंने एक मार्केट रिस्क प्रीमियम ऐड कर दिया, कि मार्केट का एक रिस्क है तो उसका प्रीमियम ऐड कर दिया मैंने 8%, तो मैंने कर लिया 15%. फिर मैंने स्टार्टअप में लगाया तो मैंने उसमें कंपनी स्पेसिफिक रिस्क प्रीमियम वो भी ऐड कर लिया. तो मेरा क्या हो गया? मेरा एक्सपेक्टेशन हो गया लेट सपोज 25%, 30%, कि अगर स्टार्टअप के अंदर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है तो उसे यार 25-30% तो चाहिए, बिकॉज उसके 10 में से 2 स्टार्टअप तो फेल भी होंगे, 5 स्टार्टअप 6 स्टार्टअप तो फेल भी होंगे, 3-4 स्टार्टअप जो है वो एवरेज करेंगे, और 1-2 स्टार्टअप जो है आउट परफॉर्म करेंगे. यू अंडरस्टैंड? सो दैट्स व्हाई इन while कैलकुलेटिंग आवर वैल्यूएशन, हमने फ्यूचर जो प्रोजेक्शन बनाई है उसमें से जो हमारा प्रॉफिट आया है और उसके बाद जो हमारा कैश फ्लो आया है उसको हम डिस्काउंट करेंगे एक रीजनेबल डिस्काउंट रेट से. दैट शुड बी, if we are a startup, it should vary anywhere between 20% to 30%, राइट? और वो डिस्काउंट करके जो मेरी वैल्यूएशन आएगी उसे बोलते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन. देखना चाहेंगे आप सब प्रैक्टिकली कैसे होती है? ठीक है, देखना तो चाहेंगे. जब प्रेजेंटेशन में we should take home that how the valuation of a company is done. So we'll understand from a very basic exercise जो एक लेमैन को भी समझ आती है, तो आपको इससे हम एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है? So are you able to see the PDF? Okay, just give me a second. Yeah, I am trying to increase the size. Hmm. Okay. So the first step we discuss is that we should make a projected profit and loss account. So here you can see this company was into an education technology company. So what this company used to do was that they used to give the classes for Vedic mathematics. तो ये वैदिक मैथमेटिक्स सिखाते थे. इनके डायरेक्ट क्लाइंट्स भी थे इंडिया में, इंडिया से बाहर, और ये जो है स्कूल्स और कॉलेजेस के साथ भी टाई अप करते थे, जिसके अंदर ये वैदिक मैथमेटिक्स के कोर्सेज रन करते थे और सारा ऑनलाइन एजुकेशन देते थे. तो इन्होंने फ्यूचर अपनी प्रोजेक्शन करी कि अगले 5 सालों में मेरा रेवेन्यू कितना होगा, मेरा एक्सपेंसेस कितना होगा, बिजनेस डेवलपमेंट और मार्केटिंग में कितना एक्सपेंस होगा, सैलरीज में कितना होगा, टेक्नोलॉजी में कितना होगा, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस कितने होंगे, अदर एक्सपेंसेस कितने होंगे, और फिर मेरा इबिट्टा कितना आएगा. इबिट्टा किसे बोलते हैं? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, टैक्स एंड amortization. तो इसे बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट. ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब जो मेरा धंधा चल रहा है तो उसमें जो है मोटा मोटी मेरा बिजनेस कितना टका प्रॉफिट देता है उसे बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट और इबिट्टा.
What is amortization? Amortization is a depreciation which is done on your intangible assets. For example, if you have a technology, so that technology would have a lifetime. कि आपने एक पेटेंट कराया है, अब पेटेंट की 10 साल की लाइफ है, अब हर साल जो है उसकी यूजफुल लाइफ कम होती जा रही है। तो अगर वो पेटेंट लेने में आपको 10 करोड़ का खर्चा आया, तो हर साल आप 1-1 करोड़ रुपए अपनी बैलेंस शीट में कम करते रहोगे और अपने खर्चे में करते रहोगे, क्योंकि 10 साल बाद वो एसेट खत्म हो जाएगा। सो दैट इज amortization. Depreciation इज हैपेंस ऑन योर टेंजेबल एसेट्स। आपकी गाड़ी के ऊपर डेप्रिसिएशन होता है, आपकी बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन होता है, लेकिन अमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल एसेट होता है। टैक्स वी ऑल नो देयर इज अ इनकम टैक्स रेट ऑफ 25 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली 25.14% जो है हमारा इनकम टैक्स आता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 31.2% आता है हमारा एलएलपी के ऊपर। अब बहुत सारे लोगों का इसके बीच में मैं आपको और भी थोड़ा सा बता देता हूँ, टैक्सेशन एस्पेक्ट ऑल्सो। सो लॉट ऑफ पीपल थिंक दैट वी आर रजिस्टर्ड अंडर स्टार्टअप इंडिया, सो वी आर exempted अंडर इनकम टैक्स। सो हाउ मेनी ऑफ यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड अंडर स्टार्टअप इंडिया? दे कैन पुट yes in the chat bot, or they can put no in the chat bot. तो गवर्नमेंट ने जो है बहुत ज्यादा जो है ऐसा प्रमोशन किया कि अगर आप स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर्ड हो तो आपको जो है इनकम टैक्स से एग्जेम्पशन मिलेगी, राइट? बट द पॉइंट टू अंडरस्टैंड इज दैट देयर आर टू लेवल ऑफ रिकॉग्निशन अंडर स्टार्टअप इंडिया। फर्स्ट लेवल ऑफ रिकॉग्निशन इज डीआईपीपी, and the second level of recognition is interministerial board. DIPP is Department of Industrial Policy and Promotion, and the second is interministerial board. जब हमारा पहला रिकॉग्निशन होता है तो 1 लाख कंपनियों को पहला रिकॉग्निशन मिल गया स्टार्टअप इंडिया का, तो हमें जो है ना एंजल टैक्स एग्जेम्पशन मिलती है। एंजल टैक्स एग्जेम्पशन मतलब कि अगर किसी कंपनी ने हायर फंडिंग, हायर वैल्यूएशन पे हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया तो उस पे हमें टैक्स नहीं लगेगा। और जब हम सेकंड लेवल ऑफ रिकॉग्नाइज्ड होते हैं इंटर मिनिस्टर बोर्ड से, तब हमें इनकम टैक्स एग्जेम्पशन मिलती है, जो कि 3 साल की एग्जेम्पशन है आउट ऑफ फर्स्ट 7 years ऑफ आर स्टार्टअप्स। वो जो है आज की डेट में 3,500 कंपनियों को मिली हुई है इंटर मिनिस्टर बोर्ड से स्टार्टअप इंडिया में रिकॉग्निशन। तो हमारे माइंड में अगर कोई नोशन चल रही है कि हमारा इनकम टैक्स एग्जेम्प्ट है, सो प्लीज वॉश अवे दैट नोशन। ऑल ऑफ अस आर लाइबल टू पे टैक्सेस। ठीक है जी। कमिंग बैक टू आर पॉइंट ऑफ वैल्यूएशन, तो हमने ऐसा प्रॉफिट एंड लॉस बनाया। आप सब अपना ऐसा प्रॉफिट एंड लॉस बना सकते हैं जिसमें हमने अपनी इबिटा कैलकुलेशन करी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट किया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट किया। इसके बाद हम अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट ऐसे होती है एक सिंपल फॉर्मेट में, हमारी लाइबिलिटीज ऊपर लिखी हुई है, शेयर कैपिटल, हमारी बोरोइंग्स, हमारी ट्रेड पेबल्स, बोरोइंग्स एक्सेट्रा, और फिर हमारे एसेट्स हैं, फिक्स्ड एसेट्स, हमारी इन्वेस्टमेंट्स, कैश इक्विवेलेंट, ट्रेड रिसीवेबल, अदर एसेट्स। ये हमने बैलेंस शीट बना ली। फिर बैलेंस शीट से हमने अपना कैश फ्लो बनाया। कैश फ्लो इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट मे हैपन कि कंपनी प्रॉफिटेबल है लेकिन कंपनी के पास कैश नहीं है, और ऐसा हो सकता है कि कंपनी बिल्कुल लॉस मेकिंग है लेकिन कंपनी के पास बहुत कैश है। हमारे पास इतनी सारी कंपनीज हैं आज की डेट में जो कि लॉस मेकिंग कंपनीज हैं, जैसे कि हमारी स्विगी हो गई, हमारे पेटीएम हो गया, बट उनके पास बहुत कैश पड़ा हुआ है। जोमेटो जो था इस साल वो प्रॉफिटेबल टर्न हुआ है, बट लास्ट ईयर तक दैट वाज लॉस मेकिंग कंपनी। बट इट्स शेयर वैल्यूएशन व्हेन इट फेल, तो वो इस लेवल तक आ गई थी कि जितना उसके पास पैसा पड़ा है बैलेंस शीट में वहां तक उसकी वैल्यूएशन आ गई थी, राइट? नाउ द स्टॉक हैज ऑलरेडी recovered a lot from that angle because Blinkit is also doing very good. But point to understand is the cash and profits are two different things. And if we talk generally, they are proportional. ठीक है, अगर प्रॉफिट ज्यादा होगा तो कैश बैलेंस ज्यादा होगा, बट इट इज नॉट ट्रू इन ऑल सर्कमस्टांसेस, राइट? किसी का बिजनेस एडवांस का है कि भाई वो एडवांस में सारी पेमेंट लेता है अपने क्लाइंट से, तो वो हमेशा कैश रिच कंपनी होगी। किसी क्लाइंट का बिजनेस ये ऐसे कि अगर मैं B2G हूँ, ठीक है, मेरा क्लाइंट गवर्नमेंट है, अभी गवर्नमेंट में क्या होगा कि मेरे पैसे ही जो है 6 महीने बाद आएंगे, 5 महीने बाद आएंगे, तो मेरे को हमेशा, चाहे मैं जितने भी प्रॉफिटेबल कंपनी हूँ, मेरे को हमेशा जो है पैसों की किल्लत होगी, हमेशा जो है मेरे को पैसों की रिक्वायरमेंट रहेगी। सो इसलिए डिस्काउंटेड कैश फ्लो में जो वैल्यूएशन निकलती है दैट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन कैश एंड दैट इज नॉट बेस्ड ऑन प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। या बट यू कैन से दैट मोर और लेस दीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन मोस्ट ऑफ द केसेस, राइट? तो हमने अपना ये कैश फ्लो बनाते हैं। कैश फ्लो बनाने के लिए हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालते हैं कि बिजनेस को रन करने से, धंधे को रन करने से कितना मेरा प्रॉफिट हुआ है। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज निकालते हैं कि मैंने कोई फिक्स्ड एसेट खरीदा या मैंने कोई फिक्स्ड एसेट बेचा, और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से कितना है। और फिर हम फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी निकालते हैं। कैश फ्लो निकाल के हम उसे डिस्काउंट करते हैं। यहाँ पे हमने 25.75% एक डिस्काउंट रेट यूज किया है टू फाइंड आउट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस मनी। प्रेजेंट वैल्यू मीन्स सिंपल कि अगर ये दिखा रहे कि चौथे पांचवें साल में मैं 38 करोड़ रुपीस
कंपनी में आएगी, तो 38 करोड़ रुपीज जो 5 साल बाद आएंगे, आज की डेट में उसकी कितनी वैल्यू है? ठीक है, तो आज की डेट में उसकी वैल्यू है 12 करोड़ 36 लाख रुपए। यू अंडरस्टैंड? तो आज की डेट में मैंने ये सारी वैल्यूज को ऐड कर लिया टू फाइंड आउट माई प्रेजेंट वैल्यू, कि मेरी प्रेजेंट वैल्यू 13 करोड़ रुपए है। फिर एक कैलकुलेशन निकलती है टर्मिनल वैल्यू। टर्मिनल वैल्यू मीन कि मैंने बोला 5 साल के अंदर मेरा बिजनेस मैच्योर हो जाएगा, ठीक है, एक बड़ी कंपनी बन जाएगी, और जो जीडीपी ग्रोथ रेट है, जिस ग्रोथ रेट से मेरी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, उस ग्रोथ रेट से मेरी कंपनी परपीचुअली ग्रो करेगी, ईयर ऑन ईयर। एवरी ईयर माय कंपनी विल ग्रो बाय 5%, 6%, 4%, आफ्टर 5 years, आफ्टर 7 years, आफ्टर 10 years। सो वी टेक अ टर्मिनल वैल्यू कि यार 5 साल के बाद जो मेरे 38 करोड़ रुपए हैं, वो 38 करोड़ रुपए मेरे हर साल 5% से ग्रो होते चले जाएंगे। तो उसके एक फॉर्मूला लगा के मैं वैल्यूएशन निकालूंगी, 5 साल के बाद मेरी कंपनी की कितनी वैल्यूएशन होगी। सो दैट कम्स आउट टू बी 62 करोड़ रुपीज इन दिस एग्जाम्पल। सो द कंपनीज वैल्यूएशन कम आउट टू बी 76 करोड़ रुपीज अप्रोक्सीमेटली। ठीक है जी। देन 76 करोड़ पे हमने कुछ डिस्काउंट दे दिया, क्योंकि एक छोटी कंपनी थी, तो ऐसा तो है नहीं कि इसके शेयर्स रिलायंस की तरह बिक जाएंगे, या फिर ये ओयो, अगर ओला, उनके शेयर्स भी बिकने कंपैरेटिवली आसान है। बट फॉर अ स्मॉलर कंपनी शेयर्स माइट नॉट बी सेलेबल लाइक दैट, सो वी गिव अ 25% डिस्काउंट दैट योर शेयर्स वुड बी ट्रेडेड एट अ लेसर वैल्यू बिकॉज इट्स अ स्मॉल कंपनी। So we gave a 25% discount due to lack of marketability, which came out to be 57 crore. And then we further discounted it because this company was conducting all these sessions on Zoom. They did not had any technology of their own to deliver their sessions. So हमने बोला 43 करोड़ रुपीस की आपकी वैल्यूएशन आ गई यूजिंग डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल। ठीक है, आई होप एवरीवन इज एबल टू अंडरस्टैंड बेसिकली हाउ अ वैल्यूएशन ऑफ अ कंपनी वर्क्स यूजिंग अ डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल, राइट? Abhi, investors will always ask you what is the logic behind putting these numbers, basically, right? So whatever projections you have done, so you should have a logical reasoning to it, that why a particular numbers are there, and then you need to justify with your business sense, with your business acumen, with your research for which you have done in your business, and that's why you are doing your business, because you are convinced that this is something which will be really profitable in the future, and with that confidence investor would be interested to invest into a business। ठीक है, अब हमने डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल समझा। डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल के बाद इन्वेस्टर क्या कहते हैं कि यार ये तो ना चीज समझ नहीं आई, ये तो आप कुछ भी बना लो, आप 100 करोड़ कर दो, आप 1000 करोड़ कर दो, आप 50 करोड़ रुपए कर दो। तो इन्वेस्टर ऑफन सेज दैट वी विल नॉट रिलाई ऑन द डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशंस दैट यू हैव मेड। So then we need to justify to the investor that how our valuation is justifiable। तो उसके अंदर हम एक अप्रोच यूज करते हैं मार्केट बेस्ड मल्टीपल, जिसमें हम मार्केट बेस्ड बिजनेस वैल्यूएशन निकालते हैं। इफ few people have invested into stock market, so you would have heard about PE ratio. PE ratio means price earning ratio. So I'll give you an example to make you understand about it. So PE में, हाँ, मार्केट मल्टीपल में क्या होता है, we find out the list of competitors. So who are our competitors basically, और उनके क्या नंबर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर दिस एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी वी फाइंड आउट द नंबर्स फॉर वेदांतु, बाइजू एंड अन अकेडमी, एंड वी फाउंड आउट व्हाट इज देयर सेल्स नंबर, व्हाट इज देयर प्रॉफिटेबिलिटी, हाउ मेनी मंथली वेबसाइट विजिट्स डू दे हैव, what is their valuation and what is their sales। at the end you can see we found out sales multiple, कि इस कंपनी का 10 करोड़ का रेवेन्यू है, 700 करोड़ की वैल्यूएशन है, तो ये 67 टाइम्स इट्स रेवेन्यू ऑपरेट कर रही है। इस कंपनी का 28 टाइम्स ऑपरेट कर रही है बाइजू, और अन अकेडमी 62 टाइम्स ऑपरेट कर रही है अपने रेवेन्यू के। ठीक है, सो व्हाट हैपेंस इज कि वी फाइंड आउट अ केपीआई, की परफॉर्मिंग इंडिकेटर। किसी भी बिजनेस का केपीआई क्या है, वो सेल्स हो सकती है, वो प्रॉफिट हो सकता है, वो नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स हो सकता है, वो नंबर ऑफ डाउनलोड्स हो सकता है। सो व्हाट इज द की परफॉर्मिंग इंडिकेटर फॉर एनी बिजनेस, एंड वी फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यूएशन ऑफ दैट कंपनी। देन वी फाइंड आउट व्हाट इज द मल्टीपल। मल्टीपल मतलब वो अपने नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स के कितने टाइम्स उसकी वैल्यूएशन है, उसके अपने प्रॉफिट्स के कितने टाइम वैल्यूएशन है, उसके अपने रेवेन्यू के कितने टाइम्स वैल्यूएशन है, वो मल्टीपल हम निकालते हैं। वो मल्टीपल सेल्स मल्टीपल भी हो सकता है, प्रॉफिट मल्टीपल भी हो सकता है,
वो हमारा नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स का मल्टीपल भी हो सकता है, और वो मल्टीपल फिर हम लगाते हैं अपने करंट बिजनेस में। तो इस कंपनी का टर्नओवर उस समय था 1 करोड़ 78 लाख रुपए, 1 करोड़ 78 lakhs। देन वी अप्लाइड मोस्ट कंजर्वेटिव मल्टीपल ऑफ 28 ऑन टू इट टू फाइंड आउट द वैल्यूएशन विच केम आउट टू बी 50 करोड़ रुपीज। इस कंपनी की फिर वैल्यूएशन आई। ठीक है जी। 50 करोड़ रुपीज मार्केट मल्टीपल से वैल्यूएशन। आई होप ऑल ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर सेइंग। यू कैन आस्क मी टू रिपीट, आई विल बी हैप्पी टू रिपीट इट। सो व्हाट वी डिड इज, हमने कॉम्पिटिटर्स का डेटा निकाला। डेटा इज पब्लिकली अवेलेबल ऑन एमसीए वेबसाइट। वहां से हमने डेटा निकाल के देखा कि कंपनी की कितनी वैल्यूएशन है, कंपनी कितने मल्टीपल पे जो है ऑपरेट कर रही है। उसके बाद वो मल्टीपल हमने अपने बिजनेस पे लगाया कि मेरे जो करंट नंबर्स है हमने उस पे लगाया। ठीक है। फिर हमने एक वैल्यूएशन निकाली। तो इस कंपनी की वैल्यूएशन हमने दो तरीके से निकाली, डिस्काउंटेड कैश फ्लो से और मार्केट मल्टीपल से। डिस्काउंटेड कैश फ्लो पे मेरी 43 करोड़ आई थी, मार्केट मल्टीपल पे 50 करोड़ आ गई। मैंने दोनों पे वेट असाइन कर दिए और मेरी कंपनी की वैल्यूएशन आ गई 46 करोड़ रुपीज अप्रोक्सीमेटली। So when this company was approaching investors, the investor was giving this company funding at the valuation of 10 crore rupees. But they were able to close this deal for 33 crore rupees valuation by using this exercise and by doing the negotiations like that. If we don't have this exercise, तो जैसे शार्क टैंक के अंदर होता है ना कि यार हम इतनी वैल्यूएशन दे रहे हैं, तो वो कहते हैं यार नहीं चलो आप 10 करोड़ दे रहे हो, हम तुम्हें 5 करोड़ देंगे, तो वो बोलते हैं चलो बीच की बात कर लो 7 करोड़। बट इफ वी पुट सम लॉजिकल नंबर्स इनटू इट कि यार ये पांच कंपनी मेरी कॉम्पिटिटर है, जब उनको 10 का मल्टीपल मिला, आप यार मेरे को 8 का दे दो, उससे कम क्यों दोगे आप मेरे को मल्टीपल। व्हेन वी हैव दिस काइंड ऑफ रीजनिंग विद अस अवेलेबल, देन वी आर एबल टू नेगोशिएट हार्ड विद द इन्वेस्टर्स। एंड इन्वेस्टर्स ऑलवेज अप्रिशिएट दीज रीजनिंग्स, बिकॉज उन्हें पता है कि फ्यूचर राउंड में जब ये फाउंडर नेगोशिएट करेगा ना अपनी वैल्यूएशन, तो फायदा किसका होगा, वो करंट इन्वेस्टर को होगा, राइट। So this is how we need to negotiate with the investor. We should have all the data for our competitors. We should have made our financial model to find out valuation for a company. Okay. So we discussed this relative pricing technique is the market multiple method we discussed. इसके अंदर हम अपने precedent transactions देख सकते हैं कि कोई ट्रांजैक्शन, कोई डील हुई हो एमएनए की हमारे पास्ट के अंदर सिमिलर इंडस्ट्री में, या फिर हम अपने किसी कॉम्पिटिटर को जो लिस्टेड कंपनी है उसका डेटा फाइंड आउट कर सकते हैं टू फाइंड आउट द वैल्यूएशन ऑफ आवर कंपनी। फिर आप लोग बोलोगे कि कुछ कंपनियां तो हमारे में से ऐसी है जिनका इतना रेवेन्यू ही नहीं है, तो मार्केट मल्टीपल मेथड लगाना पॉसिबल नहीं है, तो अब हम क्या करें, या फिर हम अर्ली रेवेन्यू प्री रेवेन्यू कंपनीज हैं, तो हम क्या करें। तो फिर उसके लिए दो मेथड निकले, वैल्यूएशन बाय स्टेज मेथड और बरकस मेथड। ये जो मेथड्स हैं, दीज आर नॉट साइंटिफिकल मेथड्स। These methods are prepared on the basis of various deals that has happened in Silicon Valley over the period of over the years which has happened। तो इसके बेसिस पे उन्होंने कर दिया कि अगर आपके पास एक एग्जिस्टिंग बिजनेस आइडिया है, ये बिजनेस प्लान है, तो आपकी वैल्यूएशन 3 करोड़ रुपए है। अगर आपकी जो है बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है इन प्लेस, तो हम आपको जो है 7 करोड़ की वैल्यूएशन दे देंगे। आपका फाइनल प्रोडक्ट प्रोटोटाइप रेडी है, तो आपको 10 करोड़ की वैल्यूएशन दे देंगे। और अगर आपके पास पार्टनर्स हैं जिससे जो है आपको कस्टमर बेस मिलेगा, तो आपको 20 करोड़ की वैल्यूएशन दे देंगे। और अगर हम श्योर हैं कि आपकी कंपनी ग्रो करेगी और बहुत प्रॉफिट बनाएगी, तो हमको 30-35 करोड़ रुपए हम आपको वैल्यूएशन दे देंगे। सो दीज आर दी मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन, जिसके अंदर वो एक एस्टिमेटेड दे रहे हैं कि आपकी एस्टिमेटेड वैल्यूएशन इतनी होनी चाहिए। वी कैन नॉट गो टू द इन्वेस्टर एंड नेगोशिएट कि यार इतनी वैल्यूएशन, क्योंकि वैल्यूएशन बाय स्टेज मेथड कहता है तो इतनी तो आपको मुझे देनी चाहिए। बट एज अ बेंचमार्क फिगर यू कैन कीप इट इन योर माइंड कि यार इस बेसिस पर जो है मैं अपनी कंपनी की वैल्यूएशन कर सकता हूँ, कि बिल्कुल ही नया स्टार्टअप हूँ तो 3 करोड़ रुपए के आसपास में अपनी वैल्यूएशन कर लेता हूँ। मेरा प्रोडक्ट रेडी है, मेरे पास स्ट्रॉन्ग टीम है, तो अराउंड 10 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन मैं अपने पास कर लेता हूँ। और जो है क्लियर कट रेवेन्यू ग्रोथ काफी अच्छी इंप्रूवमेंट हो गई, तो अराउंड 20 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन मैं कर लेता हूँ। ठीक है। तो इंडिया के अंदर मोर लेस इतना सिस्टम चलता है। ठीक है। तो बरकस मेथड भी यही कहता है कि आइडिया है तो $500,000, प्रोटोटाइप रेडी है तो 500,000 और जोड़ लो, मैनेजमेंट टीम बहुत तगड़ी है तो 500,000 और जोड़ लो, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है तो 500,000 और जोड़ लो, और प्रोडक्ट रोल आउट हो गया, सेल स्टार्ट हो गई है, तो 500,000 और जोड़ लो। विल बी शेयरिंग दिस प्रेजेंटेशन विद यू, सो विल हैव दीज थिंग्स विद यू, सो डोंट वरी। सो नाउ इट डिपेंड्स
We have discussed different methods of valuation in which we discussed about discounted cash flow, we discussed about market multiple, we discussed about valuation by stage method and Berkus method. So now it depends कि what stage our company is into और किस stage पे मेरे को कौन सी valuation लगानी है. So if our company is a startup or ideation stage, we will use a cost approach and income approach. ठीक है, क्योंकि market multiple तो यहाँ पे काम आएगा नहीं. You understand? Because I don't have any numbers. When we are into rapid expansion, then income approach means discounted cash flow. तो discounted cash flow तो चलेगा ही चलेगा हर जगह, क्योंकि discounted cash flow is a very important aspect, though it is not considered so much relevant in its entirety. But if we combine it with other valuation methods, then it makes a lot of sense. You understand? Yeah. So we'll use income approach and we'll use a market approach जिसमें हम revenue के multiples लेंगे rapid expansion में. Then my company जो rapid expansion में थी, for example आज की डेट में Paytm, Zomato, we cannot say कि these companies are into rapid expansion, right? So these companies might have moved from rapid expansion to now high growth, maybe Ola, Uber. So rapid expansion phase has already gone for them. Zomato, Swiggy. So they have already acquired a large market. Now they are into high growth companies, but they are not into रैपिड एक्सपेंशन. सो ऐसी हाई ग्रोथ कंपनी से क्या एक्सपेक्टेशन होती है कि भैया प्रॉफिट लाओ, प्रॉफिट चाहिए अब तुम्हारी कंपनी से. सो वील यूज इनकम अप्रोच एंड वील यूज मार्केट अप्रोच वेयर इन वील प्रेशराइज दीज कंपनीज टू build profits for themselves, and then company becomes mature company. So if they talk about traces, if we talk about TCS, if we talk about Infosys, so these companies are mature companies. If we talk about naukri.com, shadi.com, so these companies are mature companies, and if even if these companies are not profit making, then it's a bad situation, right? So in mature stage we tell it कि यार प्रॉफिट मल्टीपल्स में हम वैल्यूएशन निकालेंगे, प्राइस अर्निंग रेशियो के बेसिस पे हम वैल्यूएशन निकालेंगे, right? So as our company keeps on growing, it moves from one stage to another stage. Similarly, our methodology for valuation also keep on changing. So at the time of funding, what are the basically what is the process of funding? So first of all, एक term sheet बनती है. We'll show you the sample term sheet. We'll also discuss कि what are the terms of the term sheet. So एक term sheet होती है layman language में कि what are the terms on which the funding is coming into my company. ठीक है, वो टर्म शीट साइन होती है. उसके बाद आपका ड्यू डिलीजेंस होता है. एक आपका टेक्निकल ड्यू डिलीजेंस होता है जिसके अंदर चेकिंग होती है कि आपकी वेबसाइट का डेटा कहीं से कॉपी पेस्टेड तो नहीं है, आपका जो पेटेंट है वो एक्चुअल है या नहीं, ट्रेडमार्क आपकी कंपनी में है या नहीं है. दूसरा होता है आपका लीगल ड्यू डिलीजेंस, जिसमें होता है आपके जीएसटी के कंप्लायंसेस प्रॉपर है, आपके कंपनीज एक्ट के कंप्लायंसेस प्रॉपर है या नहीं, आपके लेबर लॉ के कंप्लायंसेस प्रॉपर है या नहीं. तीसरा आपका होता है फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस. फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस देखा जाता है कि आपकी कंपनी का एनालिसिस किया जाता है कि आपकी कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन कितनी है, आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितनी है, आपकी लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ कस्टमर कितनी है. आपकी लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ अ कस्टमर कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन से ज्यादा है या नहीं है, तभी तो कंपनी प्रॉफिटेबल होगी, ग्रोथ ओरिएंटेड होगी. ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट से आपकी कंपनी के ऊपर एनालिसिस किया जाता है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट से, टू सी वेदर द बिजनेस इन विच दे आर इन्वेस्टिंग मेक सेंस एंड इट इज प्रॉफिटेबल, राइट? ऐसे जब ड्यू डिलीजेंस हो जाता है तो इन्वेस्टर आपको एक लिस्ट देता है कंडीशंस की. उन कंडीशंस को दो पार्ट में डिवाइड करता है. एक को बोलते हैं कंडीशन प्रेसिडेंट और एक को बोलते हैं कंडीशन सब्सिक्वेंट. कंडीशन प्रेसिडेंट ऐसी कंडीशंस होती हैं जो आपको फुलफिल करनी होती है, आपको सारी चीजें सही करनी होती है बिफोर द इन्वेस्टमेंट हिट्स योर बैंक अकाउंट. और कंडीशन सब्सिक्वेंट वो होती है दैट यू कैन डू आफ्टर द फंडिंग हिट्स योर बैंक अकाउंट. तो आप जब कंडीशन प्रेसिडेंट पूरी कर लेते हो, जो भी आपकी बुक्स के अंदर कमियां निकलती हैं वो आप पूरी कर लेते हो, तो आपको एक जो है कंडीशन प्रेसिडेंट क्लोजर लेटर, सीपी क्लोजर लेटर मिलता है. जिसके बाद जो है आपका एक शेयर होल्डर एग्रीमेंट साइन होता है. शेयर होल्डर एग्रीमेंट एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है टर्म शीट का, जिसमें सारे टर्म्स लिखे जाते हैं. उस शेयर होल्डर एग्रीमेंट के बाद जो है आपका प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स, आपको एक ऑफर ओपन करना होता है. वो ऑफर आपको अपने क्लाइंट्स को भेजना होता है. अब उसके लिए अपने इन्वेस्टर्स को भेजना होता है, सॉरी, उसके लिए आपको वैल्यूएशन रिपोर्ट चाहिए होती है. यू नीड थ्री टाइप ऑफ वैल्यूएशन रिपोर्ट. फर्स्ट, एज पर कंपनीज एक्ट यू नीड अ वैल्यूएशन रिपोर्ट फ्रॉम अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर. Okay, so as per Companies Act, you need a registered valuer valuation report. You can approach IS Start, you can approach Starter CFO. We are registered valuers, will be happy to help you. Second, you need a merchant banker valuation report as per Income Tax Act. Income Tax Act बोलता है merchant banker से valuation report लाओ. तो तुम्हें दो valuation report चाहिए होती है.
थर्ड, अगर आपकी फंडिंग इंडिया से बाहर से आ रही है, इफ यू आर गेटिंग अ एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यू मे नीड अ वैल्यूएशन रिपोर्ट आइदर फ्रॉम अ मर्चेंट बैंकर और अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो जो मर्चेंट बैंकर वाली लोग हैं वो दो, इनकम टैक्स में और फीमा में आपके काम आएगी, और कंपनीज एक्ट में यू नीड अ वैल्यूएशन रिपोर्ट फ्रॉम रजिस्टर्ड वैल्यूअर एज पर लॉ। सो वो वैल्यूएशन रिपोर्ट आप लगाते हो अपने ऑफर डॉक्यूमेंट में, और आप एक ऑफर खोलते हो एमसी की वेबसाइट पे, जिसपे आप इन्वेस्टर्स को इनवाइट करते हो कि आप मेरी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करो। इन्वेस्टर आपकी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, आप उन्हें शेयर्स इशू कर देते हो, एंड देन यू कैन स्टार्ट यूजिंग दैट मनी फॉर योर कंपनी पर्पसेस। दिस इज द process of funding which has happened for all these startups which has been funded so far within India. Okay, friends. So we can discuss what is the sample term sheet. Oh, sorry, what is term sheet? So term sheet is a simple document wherein all the terms are written off for the funding which is coming in. So व्हाट इज द वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी? एक ईसॉप पूल बनाना बहुत जरूरी हो जाता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिटरमिन दैट व्हाट्स द वैल्यूएशन ऑफ योर कंपनी फॉर गिविंग ईसॉप्स टू योर एम्प्लॉइज। व्हेन वी डू ऑल these exercise of our future projections and market multiple study or the market research that we do all on all our competitors and on our industry, then we are able to give valuation to our business। कैसे? हम फाइंड आउट करते हैं कि आज की डेट में मेरा कितना धंधा है, और लेट सपोज मेरा कॉम्पिटिटर है रिलायंस, और लेट सपोज रिलायंस 20 टाइम्स ऑपरेट करता है अपने प्रॉफिट के, तो आई कैन गिव एन एस्टिमेटेड वैल्यूएशन टू माय बिजनेस राइट नाउ, राइट? 5 years डाउन द लाइन, हाउ मच विल बी माय रेवेन्यू, हाउ मच विल बी माय प्रॉफिट, एंड व्हाट विल बी माय वैल्यूएशन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है? इफ आई एम गिविंग 10 शेयर्स टू माय एम्प्लॉय टुडे, तो 5 साल के बाद वो 10 शेयर की वैल्यू कितनी होगी, ये आप एसर्टेन कर सकते हैं। और वो एसर्टेन करके आप अपने एम्प्लॉय को दिखा सकते हो, यार जो आज शेयर तेरे को 10 शेयर मिल रहे हैं, 100 शेयर मिल रहे हैं, आज की डेट में हो सकता है इनकी वैल्यू 1,000 रुपए हो, 2,000 रुपए हो, लेकिन 5 साल के बाद इनकी वैल्यू 1 करोड़, 2 करोड़ रुपए होगी, एंड दैट इज वेयर you will get compensated over and above your current salary which you are getting in big corporate. That's the risk you are taking, and that's the reward you will get in the form of ESOPs, and that's the estimated conservative valuation which you will get at the end of 5 years, right? तो similarly जब भी हमारी फंडिंग डील होती है, तो इन्वेस्टर्स कहते हैं कि यार ईसॉप पुल बनाकर आओ तभी मैं पैसे डालूंगा। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयज जो है दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट फॉर एनी कंपनी। लिक्विडेशन प्रेफरेंस, इन्वेस्टर कहता है कल कंपनी में कुछ खराब हो गया, सबसे पहले मेरे पैसे दिए जाएंगे, उसके बाद प्रमोटर्स अपने पैसे निकाल के लेके जाएंगे, तो उसे बोलते हैं लिक्विडेशन प्रेफरेंस। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इफ somebody is investing in your company, they may ask for a board seat. Generally when the people are investing for a double digit equity in your company, they ask for a board seat, right? Then you have dividend distribution rights, participation rights, ownership presentation rights, and different rights which help you to basically uh, determine all the terms of the valuation, right? So I'll share with you a sample valuation term sheet also, so that you get a idea. I am sure a lot of you would have seen the term sheets, but for some of you who have not seen the term sheet, I'll share the sample working. Let's me do it for you. सो दिस इज सैंपल टर्म शीट। यू कैन सी ईश्वर, आपकी कंपनी का नाम आ जाएगा, पार्टनर्स कौन कौन है, फाउंडर्स कौन कौन है, क्या शेयर होल्डिंग अभी है, क्या फ्यूचर की शेयर होल्डिंग होगी, कौन इन्वेस्टर होगा, उसे इक्विटी शेयर मिलेंगे या उसे प्रेफरेंस शेयर मिलेंगे, कंपल्सरी प्रेफरेंस शेयर्स मिलेंगे। वी कैन डिस्कस व्हाट इज इक्विटी शेयर, व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर्स इन अ सेपरेट डिस्कशन, और यू कैन पुट इट इन द फॉर्म ऑफ Q&A। विल बी हैप्पी टू आंसर इन Q&A सेशन। और सीसीडी मिलेंगे, कंपनी की कितनी वैल्यूएशन होगी। देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ प्री मनी वैल्यूएशन एंड पोस्ट मनी वैल्यूएशन। सो व्हाट्स द डिफरेंस? प्री मनी वैल्यूएशन मींस कि कंपनी, लेट सपोज एक कंपनी है आपकी, उसमें 10 करोड़ रुपए की आपने अपनी वैल्यूएशन लगाई, और 1 करोड़ रुपए आपकी कंपनी में इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है। जब 1 करोड़ रुपए इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है, 10%, 10% यू आर गिविंग टू द इन्वेस्टर, राइट? So 10 crore rupees which we are talking over here is your post money valuation। ठीक है? पोस्ट मनी वैल्यूएशन जिस पे आप परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हो ना, वो पोस्ट मनी वैल्यूएशन होती है। व्हाट इज प्री मनी वैल्यूएशन? पोस्ट मनी वैल्यूएशन माइनस द अमाउंट ऑफ फंड यू आर रेजिंग इज प्री मनी वैल्यूएशन। रिपीटिंग, पोस्ट मनी वैल्यूएशन माइनस द फंड्स यू आर रेजिंग। तो 10 करोड़ माइनस 1 करोड़,
दैट मीन्स 9 करोड़। 9 करोड़ इज माई प्री मनी वैल्यूएशन। जब भी आप वैल्यूएशन रिपोर्ट बनाएंगे ना, आपकी प्री मनी वैल्यूएशन की वैल्यूएशन रिपोर्ट बनेगी, राइट। सो देन नंबर ऑफ शेयर्स कितने मिलेंगे? डेफिनेटिव एग्रीमेंट मींस कि वी विल एंटर इनटू अ शेयर होल्डर एग्रीमेंट वंस ऑल द कंडीशंस आर मेट। टैग अलोंग राइट्स, टैग अलोंग राइट मींस कि कल जो है आप अपनी कंपनी किसी को अगर बेचते हो, तो ऐसा नहीं है कि आप अपने शेयर बेच के निकल जाओगे, आपको जो है इन्वेस्टर के भी प्रोपोर्शनेट शेयर्स बेचने पड़ेंगे, उन्हें भी एग्जिट देनी पड़ेगी। राइट टू मेंटेन प्रोपोर्शनेट शेयर होल्डिंग, कल आप कोई भी नया इशू लेकर आते हो तो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को आप चांस दोगे कि यार ये इन्वेस्टमेंट राउंड खोल रहे हैं, आप पहले इन्वेस्ट कर लो, फिर हम नए इन्वेस्टर को अप्रोच कर लेंगे। आप अपने रैंकिंग्स होती हैं कि उनके शेयर्स में क्या राइट, के शेयर्स में क्या राइट है। प्रोटेक्टिव प्रोविजन में इन्वेस्टर कह सकता है कि हर 3 महीने में आप मेरे को अपनी एमआईएस रिपोर्ट भेजो, अपनी बैलेंस शीट भेजो, decision making information rights. So this is a sample term sheet which generally we enter at the time of fundraising. If you have a very good startup, तो क्या होता है कि स्टार्टअप जो है ना अपनी ये टर्म शीट बनाते हैं, ठीक है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट दैट जो है आप अपनी ऐसी टर्म शीट बनाएं और जो है आपका बिजनेस आइडिया इतना अच्छा हो, इन्वेस्टर्स की लाइन लग जाए कि यार मुझे आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, राइट। तो उसमें क्या करते हैं, हम एक टर्म शीट बनाते हैं और हम सारे इन्वेस्टरों को भेजते हैं कि यार ये मेरी टर्म शीट है, अब अगर आपको ये टर्म्स एग्री हैं तो आप मेरी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर लो। तो उसके अंदर जो है इन्वेस्टर बोलते हैं ओके। इन्वेस्टर के अंदर जो है फोमो क्रिएट हो जाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि यार ये अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से निकल गई तो कोई और ले जाएगा, so let's invest at their terms. So it's not only that we have to agree to investor terms, it's also we can also dictate our terms sometimes if we have a fantastic idea and we have multiple investors in our company who are like ready to back our company. Depends. So we should avoid few things in term sheet. One is redemption rights. ऐसा कोई राइट हमें नहीं देना चाहिए कि फाउंडर अपने पैसों से जो है शेयर्स बायबैक करेगा। तो ओयो के केस में इट हैपेंड that he has to pledge his shares and he has to take a very big loan to buy back shares of an investor, Ritesh Agarwal, right? So we should avoid रिडेम्पशन राइट्स की यार वी विल ट्राई फॉर योर एग्जिट ऑप्शन, ठीक है। इफ इट हैपेंस वेल एंड गुड, इफ डजंट हैपन सो इट्स नॉट प्रमोटर्स लायबिलिटी टू गिव यू एन एग्जिट, राइट। देन माइलस्टोन फाइनेंसिंग, कुछ लोग बोल देते हैं कि यार तुम जो है 10 करोड़ तक पहुंचोगे तब इतने पैसे दूंगा, 15 करोड़ तक पहुंचोगे तब इतने पैसे दूंगा। सो व्हाट हैपेंस इज कि एक बार ही फंडिंग की कमिटमेंट आ जाती है ना, आप अपने एक्सपेंसेस भी वैसे इंक्रीज कर लेते हैं। आप अपना टेक का एक्सपेंस, अपनी हायरिंग एटसेट्रा, मंथली पे आउट फिर उस हिसाब से हो जाता है। तो इफ द नेक्स्ट ट्रांच डज नॉट कम इन, देन द कंपनी इज इन अ वेरी बैड सिचुएशन वेयर इन इट इज आउट ऑफ कैश एंड द मनी इज नॉट कमिंग इन। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल फॉर माइलस्टोन बेस्ड बिजनेस, milestone based financing option. Then unnecessary fees, there may be some consultants who may say कि यार मेरे को इतनी फीस चाहिए या मैं बोर्ड की फीस इतनी लूंगा etc. So you have to see whether that consultant is worth putting on the board for the fees which he is charging, and multiple board seats, ठीक है। So we should avoid, we should tell investors कि यार अगर तुम्हारी डबल डिजिट इक्विटी नहीं है, so we are not comfortable in giving you board seat, right? So these are the things we should avoid in term sheet. So how does startup funding raise? So first of all, we start with bootstrapping. हम पहले अपना खुद का पैसा लगाते हैं और कंपनी चलाते हैं। Then the first round is from friends, families and fools, that people who back us early stage और हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। We go to incubators and accelerators. So India Accelerator has their own incubator accelerator and it is one of the best incubator accelerator in India, and it is a part of a global accelerator network. So that gives you a lot of opportunities out there. We can go to incubators, accelerators जिन्होंने एक ऐसा एटमॉस्फेयर बना रखा है जहाँ पे जो है बेसिकली नेक्स्ट लेवल पे जो है हमारा स्टार्टअप जा सकता है। दे गिव अस नेटवर्किंग, दे गिव अस लॉट ऑफ टूल्स व्हिच वी कैन यूज, दे हेल्प अस इन गिविंग कोवर्किंग स्पेसेस विद आईए स्टार्ट, they are helping in giving accounting compliance services to startups like that. Then crowdfunding in India, crowdfunding is illegal basically for fundraising. So सेबी कहती है, स्टॉक एक्सचेंज ऑफ बोर्ड ऑफ इंडिया, कि यार अगर आप क्राउड फंडिंग कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने अपना स्टार्टअप डाल दिया एक वेबसाइट के ऊपर और आप कह रहे हो कि यार इसका एक शेयर 10,000 रुपए का है और आप मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करो, आपको शेयर मिलते चले जाएंगे, तो वो कह रहे हैं कि ये तो एक आईपीओ हो गया, कि आप जनरल पब्लिक को इनवाइट कर रहे हो शेयर्स खरीदने के लिए, तो ये एक इलीगल हो गया, ठीक है। लेकिन जो है आपको पता है इंडिया
is the country of jugadus. So we have various options are available over here. So there is network, angel networks nowadays. So what happens is you come to a network like India Accelerator also have their network, and you go to this network and you present your startup idea. And then there are so many investors who are sitting in a room or sitting over a Zoom call, and they listen to your pitch. The people who are interested in your business, they will invest in your company. Maybe somebody will invest 2 lakhs, somebody will invest 5 lakhs, somebody will invest 10 lakh. And as a startup, you are able to raise 2 crore, 3 crore, 5 crore rupees for your business. So that's how it is happening nowadays. It's a very hit system, and it has made funding very easy for startups, right? So you can prepare your pitch deck, you can prepare your financial model, and you can start approaching these investors, these angel networks. So this IA Start can also help you in preparing your pitch deck, your financial models, and helping you approach these kind of investors. Then financial institutions are banks, non-banking finance companies, angel investors we already discussed, and then VC firms, venture capitalists. Of course, their main business is investing into these startups, so we can approach these VC firms. They are always hunting for good projects. Generally, there is a notion in our mind that it's very difficult to approach VC funds. Yeah, but they are looking out for us. We are looking out for them. Yeah, we need to bridge that gap which is due to our inactivity. Have we taken enough actions to reach out to enough VC firms or not? So that depends on us. So that's a barrier we need to break. Of course, there are a lot of rejections in the future, in the beginning, but we need to learn from all the rejections and make our pitch, make our business in such a way so that VCs are interested in investing. And IPO. Then finally, IPO is initial public offer. All of you would have seen the shares of Zomato, shares of Policy Bazaar, and so many shares which are listed on stock exchange, and these are the startups. Government has relaxed the norms so much that even if you are a small business having a turnover of 10 crore, 20 crore, 50 crore, 100 crore, then also you can bring out your IPO. So we call it SME IPO. So there are platforms for listing of SMEs. There is a platform for listing of startups, wherein even if your company is not a profit making company, you can come out with an IPO, but practically it will not make sense to come out with an IPO if you are a loss making company. If you have a profits of, let's suppose, 2 crore, 5 crore rupees, then practically it will make a sense to come out with an IPO and raise from general public. The valuations at IPO is relatively more strict as compared to VC deals, etc. So we have to be very careful in that aspect, right? So startups really get money from banks, but of course there are few nowadays government schemes wherein we can raise funds from banks. Then they're really backing the companies, but then company needs to have good revenue run rate. They should have good GST return. They should have money in their bank account to get money from banks. So it's not very easy to get money from banks. So we need to focus on investors, shareholders from whom we need to raise funds. So, who are the shareholder for each step? First of all, we have personal savings, and we have friends and family who help us raise funds. Then at seed stage, we have VC firms, business angels, angel networks, wealth managers who back us. Then in Series A, Series B, we have VC funds, and then it's like that. In Series C, also VC funds, private equity, people invest into our company, and then finally we come out with an IPO or we go for a strategic investment. For example, Tata has taken over 1mg. So similarly, like Zomato has taken over Blinkit. So we can have a strategic investment or strategic takeover, or we can go for an IPO. In each round, we dilute around 20 to 30% of our remaining capital. For example, I raised first round, I diluted 20% capital. Now I am left with my 80% capital. Now in next round, when I give 20% to the investor, then I will be left with 64% and not 60%. So जितना मेरा remaining capital होगा उसका percentage मेरा dilute होगा. अगर 20% सेकेंड राउंड में जा रहा है तो 16% मेरे पास से गया, 4% इन्वेस्टर वन के पास से गया. तो क्या होता है कि जब फ्लिपकार्ट ने वॉलमार्ट को अपना कंपनी सेल करी, तो क्या हुआ, जो बंसल ब्रदर्स थे उनके पास 6% कंपनी के शेयर्स बचे थे फ्लिपकार्ट के. वो 6% शेयर्स उन्होंने $1 बिलियन के अंदर उनके बिके थे. सो दैट्स हाउ इट हैपेंस दैट एट द एंड ऑफ द डे योर percentage equity keeps on diluting in the company, but the value of those shares keeps on increasing with the increase in value of your company.
Right, friends? So these are various examples of top VC firms that we have in India. So thank you for being patient, listeners. I hope you would have learned a lot many things during the session today. So we are happy to share this, and we'll be happy to take your questions and answers. You can put your question and answers. In the meanwhile, I'll just let you know that you can get associated with IA Start and start a CFO. We specialize in providing virtual CFO services to startups and SMEs. When we talk about virtual CFO services, so every growing business needs a finance professional with them. Every now and then, they have a lot of queries relating to finance. So we help you manage your accounting and compliances, automate entire accounting and compliances, build your reporting system in your company, that MIS reporting system, give you analysis about your system, help you make SOPs, standard operating procedures in your company, so that you can automate your businesses. You do the internal audit of your business to find out observations in your company and make sure that your company is doing good. We help you in wealth management of your company, tax planning of your company. And the third aspect comes is the strategic advisory. In strategic advisory, we help you to decide what is the valuation of your company, how much funds you should raise, what kind of shares you should issue to the investors, and if you are raising funding from outside India, so all your FDI compliances, if you are issuing ESOPs to your employees, so framing the policy and how much shares you should give to each employee. So entire finance ambit, you can get help with our team. We are 50 plus team members based out of Delhi, serving clients all over India. And now we also have our branches in US, in Dubai, in Kenya, helping the businesses out there also. So happy to connect to all of you. So I hope everyone here would like to raise funding for their startup. Yes or no? Yes? Okay. So we will circulate amongst you a feedback form wherein you can give feedback of our session, and you can also book an appointment with us. So yeah, thank you for being patient, listeners. We'll be happy to take questions now. Yeah. Yeah. Thank you. Yeah. So Starter CFO and IS Start has already been serving lot many companies that way. We are serving companies from a startup stage to even IPO stage. So being a part of Starter CFO, it will help you in complete hand holding, so that things on which you are spending months and years, those problems can be solved within few months, being taking help of our experience and expertise. Yeah. Yes, Raghuji, you can get in touch with us. So you would get our details. We'll send you our details, and we'll also get in touch with you post the seminar. You'll get our messages, and you'll get our email. You can fill up the forms, and our team will get in touch with you. You can also visit our website, and therein you can get our credentials. Sure, Aditi, we would be more than happy to help you for the services. We can connect on email, and we can also connect on call, and also catch up sometime for further discussions. Yes, Vaibhavji will share the sample template with you of financial modeling. Okay, so Path, she is asking, I had a question regarding DCF. Could you please explain again how we calculate the terminal value of a company? Thank you so much. Thank you, Mr. Abhishek Gupta. It's like a great webinar I have today. My pleasure, sir. So nice to hear your feedback. You're based out of Hyderabad or Delhi. We are based out of Delhi. based But out of we, Delhi? Okay. yeah, but we are serving clients all over India, and we have a few clients in Hyderabad as well. Yeah. Okay. 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 Nice. Then please send me some mail or something to catch up with you Sure, or your team. Thank you very much. Have a good day. sure. Sir. Okay, thank you. Same to you. Yeah. So, Parth, for calculating terminal value, what we do is that we make projections for 5 years or 7 years with an assumption that in 5 years or 7 years, our company will become
a mature company. So whatever is the last year, we find out its number and we normalize its number. Normalize means that, for Okay. example, there was COVID. So with COVID, we need to normalize the numbers. There may be some extraordinary items during that period. So when we normalize our revenues, ki how much would be the revenue, how much would be the expense, how much would be the profitability, and how much would be the cash flow that we would be generating. So with that, we use a formula wherein we put a growth rate onto it. For example, the cash flow in the terminal value bracket may 1 plus G. G is the growth rate. That is Okay. generally 4% or 5%, right? So that is the value we get and we divide it by KD minus G. KD is the discounted, that is 20% or 25%, minus G is the growth rate 5% divided by 20%. That gives me a valuation of a terminal value. The what will be my valuation after 5 years or 7 years of my business? What is my business key that will increase perpetually over the years. So I find Okay. out that valuation and I use a discount rate of 5 years or 7 years to find out its present value. कि 5 साल के बाद मेरे बिजनेस की वैल्यूएशन लेट्स सपोज 10 करोड़ होगी, वो 10 करोड़ की आज की डेट में वैल्यूएशन जो है 2 करोड़ रुपए है. So Okay. that's how we use it. Okay. Okay. Got it. Thank you so much. Okay, my pleasure. Yeah. So you can put your questions in question and answer. It's a great opportunity for you people to ask any finance related question which you are struggling, or any questions that you have. Maybe it's income tax, maybe it's GST, maybe it's accounts, maybe it's valuation, maybe it's anything. We are here to answer it and we'll be like more than happy to assist you. You can also follow us on YouTube, on LinkedIn, on our social media channels. So you'll be getting a lot of videos. We also have a course which we'll be sharing with you, that every day you'll get 1 minute video which will make you finance expert, which will tell you about equity shares, preference shares, convertible notes, FDI, ESOPs, etc. And it will have a lot of free tools like ESOP policy, finding valuation of your company, etc., etc. So you can subscribe to it. We'll be sending it to all the participants over an email. Okay. So great connecting you with all with no questions. I understand you people would have understand all the things. How much time we need to do for financial modeling? So Vaibhav we can, it depends on team to team. Financial modeling can be done in minimum 3 to 4 days of time, and it can take around months also. So it depends that how big financial model we want to make and how much time we are devoting to it, right? Okay, friends. So with this, our seminar comes to an end. Thank you for patient listeners. So we'll catch up again. You'll get notification of next webinar from our team. Thank you very much.